Hi all. So today we are going to start our new topic, that is, first we will see how to integrate, how to execute using Maven, and then we will execute with Jenkins. Integration, how to integrate or how to use Jenkins. That topic we'll discuss, guys. Okay. First Maven, this Jenkins. Okay. Till extent report we have completed. Hmm. So Maven is actually a build management tool. Yesterday we also completed listeners and extent report. So Maven is a build management tool which is actually mostly related to DevOps, and we are using from day one all the dependencies of the Maven and pom.xml. Okay. But we can use Maven for running the test cases also. Okay, so we can execute everything or our project as a Maven test case also. So that facility is also available in Maven. So, but we are not using entire things of Maven which are related to DevOps. We are only doing the things like dependencies thing, creating Maven project archetypes, and then how to run using Maven. That only you should know. So there are 2-3 commands only: Maven clean, Maven test. Only those we know. We should know. Otherwise, from command one also we never run Maven. Okay. So only till day one we are doing Maven. So you are familiar with Maven, how to dependencies and all things. So already we are doing that. Only today we'll see how to execute using Maven. Okay. So if this is a project of Maven, then there is an option in Eclipse by default. In your ID there is an option that run as Maven test. Okay, only you need to click on this option. But initially when you will click on this option, you will get build fail. Okay, Maven will start doing the build, and initially the build will fail. Why the build will fail? So understand. This showing me 11 minutes. Okay, sure. Let it be. Okay, so before doing Maven, make sure that you are having some provisions in your project. So if you'll run Maven directly, then Maven will run directly all the test cases as a Maven. But already we are using TestNG. Okay. So it is our duty to connect our TestNG with Maven so that Maven will call the TestNG. Okay. So what is the flow, guys? Understand the flow. This Maven, first our Maven will call form.xml file. That we know, that is the heart of XML, Maven. So it will always go from form.xml. Okay. So form.xml, it will trigger according to all our dependencies. So whichever test cases are there, so it will directly execute those, but it will not go for XML, testng.xml. So from form.xml, it is our duty to connect it with our testng, testng.xml. That provision we have to do. Then this testng.xml will call multiple classes, and then these classes will call multiple tests. Okay, so that scenario, that flow will be there.
Okay. So now what we need to do in pom.xml, right now our pom.xml is not aware about this test ng. So we need to add some dependencies which are related to test ng. Okay. So that we need to do. Hmm. So initially when we have done the build, so at that time it is not having test ng XML file included. So we have to modify that. There is only one dependency which we need to modify. Okay. Actually, those are known as plugins. Okay. So if you are creating your Maven project using artifact without including without avoiding that artifact and creating simple Maven. If you are doing simple Maven project, then you initially not having this. Okay. And then just copy paste my pom.xml. I will be sending you the which part I will show you. So initially we will be having all those part. After dependencies, there is a build. So that build part you will be there if you are creating proper Maven project, including all archetype idea and everything. Okay. So initially that part will be there, but still that part is not having XML. So we need to modify that. Okay. And there is one more thing. I will show you first that pom.xml. So here, this is the pom.xml file, guys. I'll minimize this so you can see well. So here, till the dependency, however you are creating, everything will be there. And from this, after dependency, there is a build. This part, if you are creating proper Maven project, then you will be having. Okay. So here, there is one plugin. Okay, that is Maven Surefire plugin. Okay, that must be there. Maven Surefire plugin. So that plugin, the various plugins are by default there. Okay, but this plugin is initially you will be having normal Surefire plugin and we will not be having XML. So we need to just modify this plugin and copy paste from that particular site where we got the plugin which is compatible with XML. Okay, so that I have done here. You need to do that. Copy paste that plugin here. And one more thing, you need to add this dependency. That dependency is known as Lombok dependency. Okay, so that dependency you need to add from Maven repository. So first of all, for what things we need to do first, this Lombok dependencies you need to add. Second, Surefire plugin compared having XML that you need to add. Okay. Then third thing we need to do is convert all the classes. All the classes should have the name test in that. Okay. So here, otherwise Maven don't will not consider that as a test cases. Okay. So here you can see if I'm having some classes, here I'm having test. So this login test, register test. So I should rename that. Okay, login I have already renamed. So how to rename I will show you for register. So go on refactor and inside refactor just rename and just add the test word here, register test. So Maven will only find this word. If we'll find this word, then and only then it will consider that class as a test case. Okay. So I'm refactoring. So refactoring means if there is a occurrence of that class in any of other place, then also it will convert all those. Okay. Uh, okay. So that for register I have refactor. So all those tests I have to add test word. And not only here guys, but also in testng.xml file. Okay, we have taken here the testng.xml file. Here also we are providing that path of our test case. So here also this login test, the name as it is, it should be reflected. Okay, so that care that should be taken. That there should be test word added. Hmm? Okay, so those there are some provisions. If you are just doing that provision,
and I will show you from where to do that. Okay, so here, okay, if you go in Maven repository and just type Lombok here, then it will give you this project Lombok, first option. Just click on that, click on this first object, always the same method, first, create, select the first method, first option, and just copy this first dependency. हाँ, ये प्रोसीजर हमेशा यही होगी, तो जस्ट ये कॉपी करनी है हमें और कहाँ पेस्ट करनी है, हमारे pom.xml फाइल में आना है हमें, यहाँ पे pom.xml में, और यहाँ पे देखो लंबॉक की डिपेंडेंसी यहाँ पे आपको एट द एंड पेस्ट करनी है, जो मैंने पेस्ट की है लंबॉक. दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. ओके, व्हाट इज योर सेकंड स्टेप? आपको यहाँ पे जाना है, गूगल में जाना है और इतना ही टाइप करना है, मेवन श्योरफायर टेस्ट इंजन. Okay, surefire plugin already we are having. Okay, guys, and meanwhile, if you don't have, I will send you my test ng XML file also. So if you are not created proper test ng file having this build, okay, then just you, few of you people might not have be having this build option. So it is having some default option, so it should be there, and we need to replace that surefire plugin with our. So by default there will be my Maven surefire plugin. Okay, but it will not be by default with test ng. So what we need to do, we need to replace that. Just in Google, Maven Surefire with TestNG. Type that. So you'll get this option. Click on that option. And then find out something which is with TestNG. Using suite XML files. Yeah. So here we are finding this XML file. Here we can see having testng.xml. So just copy this from plugin to plugin. From this, okay, from this plugin to this plugin. You need to copy from this plugin to plugin. Okay, just copy this and paste here. But observe here, it is having normal test.ng XML file. Okay, so come here and plugin to plugin, just I have copy pasted. Replace that older one with this. Having older one is no, will not be having test.ng XML file. Okay, but make sure that this is having only test.ng XML file. But you have to mention your path. आपके test.ng XML फाइल कहाँ पे है, वो पाथ आपको यहाँ पे देना है. नॉट ओनली test.ng XML फाइल, इतना ही नहीं लिखना है. जो यहाँ पे देखा तो बस test.ng XML फाइल ओरिजिनल में आपको यहाँ पे मिलेगा, मगर यहाँ पे आपको उसका पाथ देना है. इतनी मॉडिफिकेशन बस करनी. तो इतने अगर चेंजेस आप करोगे, ठीक है, आपके इसमें प्रोग्राम में, ओनली दोस चेंजेस इफ यू आर मेकिंग, ओके, देन you are at the position to run this project with Maven. ओके, बिकॉज बाय डिफॉल्ट मेवन है हमारे साथ, डे वन से हम मेवन यूज कर रहे हैं. तो ये मेवन तो हमारे इसमें इक्लिप्स में कॉन्फ़िगर है ऑलरेडी. जो आइडियाज होती है उसमें होता है मेवन. आपको बस क्या करना पड़ता है, उसको यहाँ पे यूज करना है. मेवन इनिशियली मैंने बताया कि क्या करनी है, इनिशियल चीज है मेवन के साथ. तो फ्रॉम डे वन वी आर यूजिंग दैट पार्ट. टुडे ओनली वी आर सीइंग हाउ टू एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस. ओके, सो जैसे इस पे राइट क्लिक करना है, ऑप्शन देखो, बस कुछ भी नहीं करना है. ये इतनी अगर आप चीजें कर रहे हो, इनिशियली आपका बिल्ड बहुत बार फेल हो जाएगा, तो आपको ये मॉडिफिकेशन अगर डायरेक्टली आप करोगे और रन करोगे तो बिल्ड आपका फेल होगा. ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये सारी चीजें जो मॉडिफिकेशंस मैंने बताई है, सो आफ्टर मेकिंग ऑल दोज मॉडिफिकेशन ओनली यू विल बी एबल कि मेवन को और टेस्ट एनजी को हमें कनेक्ट करना है. ठीक है, और सारे क्लास नेम को टेस्ट नाम ऐड करना है. ठीक है, तो और वो दो प्लगइन, दो चीजें हमें, एक डिपेंडेंसी और एक प्लगइन. एक डिपेंडेंसी मॉडिफाई करनी है लॉम्बॉक की, और एक प्लगइन हमें मॉडिफाई करना है, डिपेंडेंसी ऐड और प्लगइन मॉडिफाई. ओके, श्योर फायर प्लगइन. और ये श्योर फायर प्लगइन का नाम ध्यान में रखो, क्योंकि वो हमेशा टेस्ट मेवन अगर टेस्ट करनी है तो प्लगइन हमेशा लगता है मेवन श्योर फायर प्लगइन. ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास था। अभी मैं देखो यहाँ पे बस एक राइट क्लिक किया मैंने प्रोजेक्ट पे, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, देन रन एज ऑप्शन. So by default, you will be having these option, guys. Run as Java application, run as test engine, everything that option by default you will be having. So here, this is the option, Maven test, run as Maven test. So just click on this option, run as Maven test. Okay, can you see this Maven execution start? Okay, build. They are just creating the build of your project, scanning for the project. Okay, so one by one it is going by plugins, and then it will start executing the test cases. So initially, okay, it has given build failure. Don't know, because few time before only I have executed, and it has given me successfully all the test cases. Only one test case fail. Okay, we'll see the reason. Source option 6 is no longer supported to use 7 or later. Okay, no problem. So here, I think we have uh, make some changes while right now. We'll go sure for plugin 3.2.5. Oh, sorry, here I think I have added M word. M word I have added by mistake. Okay, so I think due to this, it is making some issue. I think I'm saving this, and again I will do this. Run as Maven test. We'll see. Okay, this time build successful, guys. Okay, and it is running the test cases now. So now you can see Maven is running. Maven is first calling this pom.xml, then pom.xml is calling from that sure fire plugin calling testng.xml. Then testng.xml file already we are having all the sequence. So likewise now we are taking control from Maven. So this is depending on you from where you are running. Directly using testng.xml file or using Maven. Okay. So actually we don't run using Maven. We run using testng.xml file only. But what happened when we run on Jenkins? At that time, Jenkins always means Jenkins, there is a configuration. So it is better practice to execute Jenkins using Maven. Jenkins again will call Maven, then Maven, this likewise this will happen. So for that purpose, Maven configuration should be there inside our PC. So you can see, can you see it has created the extend report also, it has created proper projects, proper reports also. Okay, as shown yesterday. So this proves that, okay, so it is giving this test run failure 0, error 0, skip 0. Okay, build success. Okay, so this is build success mean it has built the project from scratch. जो भी डिपेंडेंसी है सब देखें और इसने क्या किया एग्जीक्यूट किया. तो ये सबको समझा. दिस इज रनिंग यूजिंग टेस्ट एनजी, रनिंग यूजिंग व्हाट मेवन. ओके, तो मेवन से आप रन कर सकते हो प्रोजेक्ट को. ठीक है, ये हमने मेवन से टेस्ट करना एक हमारा बचा था. अभी दूसरी बात कि दूसरी चीज ये है कि अगर आपको अ, ये मेवन है वो आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो आपके पीसी में. अगर आपको ये प्रोजेक्ट यूज ही नहीं करना है, नाउ लोकेशन वी आर गिविंग मेवन टू ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वी कैन डायरेक्टली डू दिस फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट आल्सो.
ओके, डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, मेवन को हम ये कमांड दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आप आओगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे कहीं भी, तो आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्टोर होगा। यहाँ पे सपोज मेरा प्रोजेक्ट स्टोर है, मेरे इक्लिप्स वर्क स्पेस है, तो वहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट क्यूफॉक्स डॉट टेस्ट ऑटोमेशन स्टोर है, ठीक है। तो इसको अगर आपको पता नहीं कहाँ पे कैसे करना है, तो बस क्या करो, अ, ये मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ से आपका जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे उस पर राइट क्लिक करो और ऐसे करो शो इन, और यहाँ पे सिस्टम एक्सप्लोरर, ऐसे अगर आप करोगे तो वो क्या करेगा, वो ओपन हो जाएगा सिस्टम एक्सप्लोरर में, ठीक है। शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, गलत कुछ तो ओपन हो रहा है। ठीक है, कुछ तो इशू आ रहा है guys। मगर ये आपको समझा, ऐसे इसमें राइट क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा, ऑलरेडी चीज ओपन है शायद इसलिए होगा, हो नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे देखो उसने ओपन किया है, मगर कंट्रोल नहीं जा रहा था, देखो 2 बार ये उसने ओपन करके रखा है, मगर बस वहाँ पे वो जा नहीं रहा था, ठीक है। तो क्योंकि कंट्रोल शायद हमारी मेवन की फाइल में होगा। तो ये देखो, ये यहाँ की आपकी प्रोजेक्ट जहाँ पे आपका है ये ओपन हो गया। तो उसमें आपका प्रोजेक्ट जो है ना उसमें जाओ, क्यू और जहाँ पे आपको फॉर्म डॉट एक्सएमएल दिखे वो पाथ तक जाओ, इसको सिलेक्ट करो पाथ को। और ये सिलेक्ट करके सीएमडी, सीएमडी मतलब कमांड फ्रॉम का शॉर्ट फॉर्म है, जस्ट टाइप सीएमडी और एंटर करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीएमडी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, अ, एक कमांड दे दो, ये कमांड होती है एमवीएन टेस्ट, ये कमांड सबको पता होनी जरूरी है। एमवीएन टेस्ट से पहले आप एमवीएन क्लीन भी एक कमांड देते हो वर्कस्पेस को क्लीन करने के लिए, और उसकी अभी जरूरत नहीं कुछ, मगर एक वो भी ध्यान में रखो। और दूसरी कमांड हमें लगती है वो है एमवीएन टेस्ट, ठीक है। तो इससे जो चीज आपने की ना, एग्जीक्यूटिंग योर टेस्ट केसेस, राइट क्लिकिंग ऑन प्रोजेक्ट, तो वही चीज, सेम चीज वी कैन डू फ्रॉम कंपाइलर, फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। तो ऐसे आप कर सकते, बट इनिशियली इफ यू गिव दिस, यू विल बी गेटिंग एरर, एमवेज कमांड इज नॉट आइडेंटिफाइड। एमवेन का उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि मेवन अपने वहां पे इक्लिप्स के साथ कॉन्फ़िगर है, मगर आपके मशीन पे आपने डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फिर से साइट पे किसी मेवन के, और आपको मेवन डाउनलोड करने का, आपको एक ये देखनी पड़ेगी, डाउनलोड मेवन, ऐसे सिंपली डालो। तो पहला ही जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करो, डाउनलोड अपाचे मेवन। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है बाइनरी जिप आर्चिव, यहाँ पे देखो बाइनरी जिप आर्चिव, तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये जब आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर, उसको थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये मेवन की बिन फाइल मेरी डाउनलोड हुई है, ठीक है। तो ये आपके डाउनलोड्स में अगर आप आओगे, ये पे जाता हूँ मैं शो फोल्डर करके, शो इन फोल्डर, तो ये डाउनलोड्स में पाओगे, तो ये फाइल आपको यहाँ पे दिखेगी, ओके। उसको अपने एक्सट्रैक्ट करो, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल आपको दिखेगी, ये अंदर की फाइल। तो ये जो फाइल है ना, जिसके अंदर ये बिन फोल्डर, ये अंदर की फाइल, फोल्डर सॉरी, अंदर का ये फोल्डर, इसको कॉपी करो और कहीं पे तो स्टोर करके आपको रखना है, ठीक है। तो मैं उसको कहीं कहाँ पे स्टोर करके रखने वाला हूँ, सी में देखो, डायरेक्टली सी में, यहाँ पे सी ड्राइव में डायरेक्टली मैंने इसको कॉपी किया, अपाचे मेवन, क्योंकि पाथ लेने के लिए शॉर्ट पाथ पड़ी इसलिए। सेम फोल्डर यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको जिस लोकेशन में चाहिए सी ड्राइव में, उसमें वो कॉपी करके रखो, ठीक है। ये एक बार कॉपी हुआ तो आपको क्या करना है, ये आपको ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ तक का जो पाथ है वो कॉपी करना है, ठीक है, कंट्रोल सी करना है बस,
कॉपी करना है और आना है आपको, ये प्रोसीजर थोड़ी ध्यान रखो, मेवन का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। और आना है आपको, सर्च में आओ और टाइप करो environmental variable. So edit the system variable option you will be getting. Open that option. Click on environmental variable. Here for system variable, just click on new. न्यू पे क्लिक करो और mven home आपको क्रिएट करना है। ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी mven home किया है, ये न्यू। तो बस आपको न्यू में जाके ये mven home टाइप करना है और वहां पे जो पाथ आपने कॉपी किया था वो आपको ऐसे करना है। तो आप न्यू में करोगे और mvn स्पेस कैपिटल, गलत में कर रहा हूँ, mvn और यहाँ पे होम करूंगा और जो पाथ आपने दिया है अभी वो पाथ में यहाँ पे कॉपी करूंगा। ओके, ओके करूंगा। अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, जो मैंने किया यहाँ पे वो हो जाएगा। देखो मैं एमवेन होम, सॉरी मैं गलत बता, मेवन होम करूँ, नाम कुछ भी दे दो, एमवेन दे दो, मेवन दे दो, ने मेवन लिया है, मेवन होम दे दो। तो मेवन होम करो और यहाँ पे वो पाथ कॉपी करो। ठीक है, तो उसको ये सिस्टम वेरिएबल का पाथ मिलेगा। ये एक हो गया। ठीक है, अभी आपको और एक इतना ही नहीं करना है, तो और ये ओके करो, इसके बाद सब ओके ओके करो और आ जाओ फिर से इसमें, इसी फोल्डर में आ जाओ और बिन के अंदर जाओ, बिन तक वो दिखे इतना पाथ कॉपी करो। ओके, ये पाथ कॉपी करो, एक एक स्टेप आगे जाओ मतलब, और फिर से आ जाओ इसमें हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल में फिर से आ जाओ, यहाँ पे इन्वायरमेंट टाइप करो। तो ये एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑप्शन आएगा, तो ये ओपन करो। तो फिर से इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाओ और अभी क्लिक इनसाइड द सिस्टम वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल में सिलेक्ट द पाथ। ओके, और इसमें आप क्या करो, पाथ को आपको एडिट करो। ठीक है, और इसमें न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो ऊपर जो भी आपने बीन तक सिलेक्ट किया है वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना है आपको, बस जो मैंने ऊपर ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी ओके ओके नहीं करता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ, बस आपको ये करना है और ओके ओके करते जाना है। ठीक है, तो पाथ आपका नया उस ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये दो चीजें आपको करनी है, तो क्या हो जाएगा, आपकी मेवन जो है इसका इन्वायरमेंट डाउनलोड हो जाएगा और उसका इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट हो जाए। क्यों करना है इन्वायरमेंटल वेरिएबल का मीनिंग वगैरह हमने इनिशियल जावा इंस्टॉलेशन के वक्त मैंने बताया गाइस। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप आओगे और आप एमवीएन टेस्ट दोगे तो वो क्या करेगा, एमवीएन टेस्ट एग्जीक्यूट करेगा, जो चीज ऊपर कर रहा था वो करेगा। अभी यहाँ पे ये आपको करना नहीं है। ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट से करना नहीं कभी भी आपके इंडस्ट्री में। आपको वो हमेशा किससे करना है, अ, आपके कॉन्फ़िगरेशन से, जेनकिन से वैसे ही करना है, मगर जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा वो कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अंदर उसको कुछ तो एरर आ गई, हम उसमें नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि ये हमें कमांड प्रॉम्प्ट से ये पे रन ही नहीं करना है। मगर ये प्रोसीजर जो वहाँ पे हो जाएगी वो यहाँ पे भी हो जाएगी। तो ये क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट से आप कैसे रन कर रहे हो। ये बस पता होना चाहिए कि कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन होता है मेवन। हम कभी करते नहीं, हम इसमें घुसते ही नहीं कभी, मगर आपको पता होना चाहिए। और ये बस आपका कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ये कमांड प्रॉम्प्ट से रन करो या ना करो, ये जो एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट की प्रोसेस है ना वो आपकी होनी चाहिए। व्हाई, बिकॉज when you will be using Jenkins, then that Maven should be configured if you are using on your machine। मगर हम Jenkins कभी भी ऐसे मशीन पे इंस्टॉल नहीं करते गाइस। उसका एक अलग सर्वर रहता है, अलग जगह पे इंस्टॉल रहता है और उसका बस हम पाथ यूज करते हैं, क्योंकि Jenkins एक टोटल डिफरेंट प्रोसीजर है जो डेवऑप्स गाइस करते हैं, हम नहीं करते। मगर यू शुड नो द थिंग्स कि ऐसे ऐसे हो सकता है। मेवन हम कैसे कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते कौन सी कमांड, एमएन डॉट टेस्ट कमांड, एमएन स्पेस टेस्ट कमांड। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है सारे का ये पता होना चाहिए मेवन तक आप। ठीक है, तो ये पार्ट था आपका मेवन का। तो हमने अभी मेवन भी कॉन्फ़िगर किया, अगर आपको ये होगा तो ये चीज की, और उसके बाद हमने क्या किया, ये सब होने के बाद हमने मेवन को यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट भी किया। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट किया और हमने उसको डाउनलोड किया और एनवायरमेंटल वेरिएबल भी सेट किए, उसके बाद भी उसका सेट कर दिया। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने की। तो उसके लिए इन्वेंट टेस्ट कमांड हमने यूज की, वो मैंने लिखा अभी। ठीक है, तो ये यहाँ तक की चीजें हमने यहाँ पे
वी आर डूइंग। ओके, होपफुली हमारी मीटिंग शुरू है। या सो till that point we have achieved. So now what we'll do, uh, this is about Maven. So now we will shift our control to Jenkins. ओके, पहले अभी हम जाते हैं जेनकिंस पे। हम्म, तो जेनकिंस देखो गाइस क्या है। जेनकिंस जो है, एक्चुअली दिस इज होल डेवऑप्स। पूरा का पूरा डेवऑप्स का इसका टूल है। हमारा बस उसकी हम हेल्प लेते हैं हमारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के लिए, हमारा बिल्ड उसमें ऐड करने के लिए। ठीक है ना। तो आपको उसका बस उतना ही पार्ट पता होना जरूरी है। नॉट हाउ टू कॉन्फ़िगर जेनकिन, हाउ टू ऐड पाइपलाइन, how to configure the job, everything that thing is taken care by DevOps guys. ओके, तो इसीलिए जेनकिन का इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो अगर चाहे तो आपके पीसी पे, मगर करने में कुछ भी पॉइंट नहीं है। क्योंकि वो चीज़ आप करते नहीं हो और बहुत लेंदी प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का। फिर भी अगर आपको करना है जेनकिन इंस्टॉलेशन, तो मैं आपको उसकी एक पीडीएफ है वो भेजता हूँ। अगर आपको टाइम है और आपकी मशीन पे करके ही देखना है, प्रोवाइडेड आपको जावा का 11 के आगे का वर्जन होगा आपकी मशीन पे, तो ही सपोर्ट करेगा जेनकिन, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसका मैं पीपीटी आपको भेजता हूँ कि कैसे करना है, उसकी पीडीएफ भेजूंगा। तो अभी तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, जेनकिन अगर आपको करना है तो आपको पहले तो जेनकिन के साइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक आपको डाउनलोड जेनकिन करना पड़ेगा, फिर जो ऑप्शन आएगा जेनकिन डाउनलोड एंड, तो यहाँ पे आके जेनकिन के अलग अलग आपको वर्जन दिखेंगे। तो रेगुलर, स्टेबल, एलटीएस, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो जनरली ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे जाओ और ये वाला जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट का वर्जन होगा वो यहाँ से डाउनलोड करो। ठीक है, यहाँ पे बस, और उसकी वो डॉट वॉर फाइल आती है गाइस, तो वो डाउनलोड करो। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो बड़ी बड़ी फाइल है, थोड़ी साइज उसकी ज़्यादा है। तो देखोगे तो अबाउट 82 82 MB फाइल है, तो वो डाउनलोड करो। तो मैंने डाउनलोड करके रखी है यहाँ पे। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे तो ये ऐसी वॉर फाइल आएगी, और उसको कॉपी करो और आपके कहीं पे एक पाथ दे दो। जेनकिन को जैसे मेवन वगैरह ये सारे हमारे प्रोजेक्ट में होते हैं, वैसे जेनकिन वी डोंट पुट इन इनसाइड आवर प्रोजेक्ट। ओके, जेनकिन को हम नहीं रखते हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इसको क्या करो, बस एक यहाँ पे मैंने सी ड्राइव पे क्यूए फॉक्स नाम का फोल्डर बनाया है, वहाँ पे जेनकिन्स नाम का ये बनाया है, और वहाँ पे मैंने ये वॉर पुट की है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, कमांड प्रॉम्प्ट में आके हम बट एक कमांड है वो देते हैं, कौन सी, जावा हाइफन जार जेनकिन डॉट वॉर। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे आपको, आप क्या करोगे, अगर करोगे तो ये कॉन्फ़िगर होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको बीच की प्रोसीजर, बहुत लेंदी प्रोसीजर वो, उसमें बहुत सेटअप करना पड़ता है। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू डेवऑप्स गाइस। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको कहाँ पे करनी पड़ेगी। तो अभी हम जेनकिन कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जेन ये प्रोसेस हम इंडस्ट्री में भी नहीं करते। डेवऑप वाले आपको जेनकिन कॉन्फ़िगर करके देते हैं, वो डेवऑप का पार्ट है। आप बस क्या करते हो, उस पे आपका बिल्ड, आपका प्रोजेक्ट ऐड करते हो, आपका जो भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है तो वो बिल्ड आप उस पे ऐड करते हो। ठीक है, मैं आपका ये मीटिंग एंड होती आ रही होगी, तो मैं ये एंड करके न्यू मीटिंग क्रिएट करता हूँ।